Good afternoon, students. Today is 23rd February 2021 and we'll be taking Unit 2 Operators and Expressions, C Programming. What are the contents which are going to cover in this session? It is, we are going to see different types of operators, arithmetic expressions, relational operators, logical operators, assignment operators, increment and decrement operators, conditional operators, type conversions in expressions. So we'll be taking 2-3 points today and then rest of the points in the next session. Now, what are the objectives which we are going to cover today is to be able to construct and evaluate the expression. So we should be able to construct, write the statement and write the expression using those constructs which we learn, operators which we learn. And then our objective is to master operator precedence and associativity. To understand implicit type conversion and explicit type conversion, that is the last topic of our this discussion. So let's begin with the introduction. What do we mean by operator? An operator is a symbol that tells the computer to perform certain manipulation. So it is particularly the symbol which you see on the keyboard. This particular symbol is used to perform some type of operations, some type of manipulations. So that is what is called as operator. Operator is one which operates on some information, some data. Say you might have heard about telephone operator, customer care operator, then the one who operates the one who operates heavy loaded vehicle, that operator of that vehicle. Okay, so the operator word means what? Which operates on certain object, which operates on certain information, certain data. So here the operator basically means that it performs some manipulation on the data to get the new result. So an expression is a sequence. Then what is an expression? Expression is a sequence of operands and operators that reduces to a single value. मतलब हमारे जो ऑपरेटर्स है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड्स है, उसको एंड उसके ऊपर ऑपरेटर्स लगाया और वो हमको एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करके देगा. नाउ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली? इफ आई टॉक अबाउट ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, if I say that I would like to add two numbers, so to perform addition, okay, we use this symbol. This is called as plus symbol, arithmetical addition symbol. Now on the data 2, 3, what we are going to perform? We are going to perform the operation, that is plus. So this is called as operator and these two are called as operands on which this operator works. So plus is the operator which works on the operand 2, 3. Okay, so the operator always works on some operand. Similarly, suppose if I talk about 2 minus 3. So here the operator is minus and the operands are 2, 3. If I would like to change the write the negative number, here this is the operator, this is operator, this is operator, and this one is operand. This is operand. Okay, so what do you mean by operand and operator, and what are its functions? We have seen for what reason we use it. So this is an operand. So operand is one which works on the operator. So operator always use the operand on which it works. So now C provides different types of operators. Now what are the different types of operators? Let's list out: arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, increment and decrement operators, conditional operators, bitwise operators, and special operators. Now let's begin with the first type of operator, that is arithmetic operator. What are arithmetic operators?
Arithmetic operators in C are plus, minus, multiplication, division, modulo division. Okay, that is, this is the division which is used to get the remainder. This percentage modulo operator, this is called as modulo operator, modulo division. This operator is used to get the remainder. Plus operator is used to get the addition of two numbers, two data, two variables. Minus is used to get the subtraction, or it can act as a unary minus to change the sign of any variable. That negative can also be used. Star is used for multiplication of two data. Division means to divide one number by second number. Dividend upon divisor. So this can be written like dividend upon divisor. And the third one is the modulo operator. Modulo operator is used for getting the remainder after division. This gives us division, gives us quotient. Okay, and this gives us remainder after division. तो यहाँ पर हमको quotient मिलेगा आंसर में, यहाँ पर हमको remainder मिलेगा. This is the difference. Now let's begin with the integer division, which truncates the remainder. So we should note that when we divide any number by the other number, you always get the integer value. When you will get the integer value, let's see. Percentage operator cannot be applied on a float or a double value, and the precedence of the arithmetic operators are like this. So let's see, what do you mean by the integer division? Say for example, if I write 2 divided by 2. Okay. So here 2 divided by 2 will give you the quotient, that is 1. You have to remember that what is the data type of this. The result will be stored after division. The quotient will be stored in the data type of the dividend. ये जो ऊपर वाला लिखा है उसको dividend बोलते हैं. इसका जो data type रहेगा उस डेटा टाइप में ही आपका क्वोशंट स्टोर होगा. क्वोशंट मतलब रिजल्ट, आंसर जो डिवीजन के बाद में आता है. तो अगर इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो आपका आंसर इंटीजर में आएगा. अगर इसका डेटा टाइप फ्लोट है मतलब डेसिमल में है तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा. अगर मैं 2.0 डिवाइडेड बाय 2 लिखूंगी तो हियर यू विल गेट द आंसर एज 1.0. राइट. So whatever may be the data type of the numerator, the result will be stored in that data type. उस data type में result store होगा. Okay. Say for example, if I write 4.0 divided by 2, the result will be 2.0. But if I make it as 3, 4.0 divided by 3. So 3 ones are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9. Likewise, it continues. Okay, this is why we are getting this result, because the numerator is having the decimal type of data. Instead, if I write 4 divided by 3, so you will get only 1 as a answer and the rest will be truncated. This will be truncated. Truncate means cut hona. Division truncates the remainder. Integer division truncates the remainder. Integer division 4 divided by 3, तो जो रिमाइंडर आता है उसको पूरा नहीं देता है, डेसिमल में नहीं आंसर करेगा, सिर्फ आपको इंटीजर में आंसर लगेगा, सिर्फ 1 आ जाएगा और जो 1 रिमाइंडर है उसको ओमिट हो जाएगा, वो चला जाएगा. Next is percentage operator, that is modulo operator. If I write 2, 3 modulo 2. So what will be the answer of this? 3 divided by 2. What is the remainder you get? That is 1. ऐसे लिखते हैं हम 3, 2, 2 ones are 2 and 1. This is called as remainder. इसको क्या बोलते हैं? Remainder. This is called as dividend. This is called as divisor. And this is called as quotient. Okay. Dividend, divisor, quotient, and this is remainder. Okay.
So when you, this is remainder. So when you use this modulo operator, you will get the remainder as an answer. So what is the answer you will get? You will get 1 as an answer. Okay. Instead of this, suppose if I write 3/2, so you will get quotient as 1 and remainder will be omitted. But if you write 3.0 divided by 2, so you will get 1.5 as a answer, as a quotient. In a statement, in an expression, suppose if there are multiple operators, then which operator to be performed first? So which operator we are going to perform? We are going to perform the unary operator first, plus or minus. प्लस या माइनस यूनियरी ऑपरेटर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में प्रेसिडेंस आएगा स्टार स्लैश एंड देन मॉड्यूलो, एंड लास्ट में प्लस माइनस, लेफ्ट प्लस माइनस जो भी पहले आएगा, चाहे प्लस आएगा चाहे माइनस आएगा, उस दोनों में से। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी हुई है? प्लस माइनस, यानी यूनिरी, यूनिरी मतलब +2 -2 -3 -4 अकेला यूज होना चाहिए, किसी दो के बीच में नहीं होता। यूनिरी बाइनरी मींस द ऑपरेटर व्हिच वर्क्स ओनली ऑन वन ऑपरेंड, दैट इज -2, दिस इज कॉल्ड एज यूनिरी। अगर मैं 2 -3 बोल रही हूँ तो कितने ऑपरेंड यूज हो रहे हैं? यहाँ पर ये ऑपरेटर है, ये 2 ऑपरेंड है, तो इसको बाइनरी ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, 2 स्टार 3, तो स्टार इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर। सो सबसे पहले प्लस एग्जीक्यूट होगा या माइनस, जो दोनों में यूनिरी पहले आएगा यूनिरी में, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंस है स्टार स्लैश एंड परसेंटेज, एंड लास्ट एट द एंड बाइनरी के साथ में प्लस या माइनस ऑपरेशन। So this is we have seen for the arithmetic operation. Now let's see the expressions along with these operators. An arithmetic expressions is a combination of variables, constants and operators. Say for example a star b minus c, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? स्टार भी लगा है, माइनस भी लगा है। तो ये पहले कैसे एग्जीक्यूट होगा? इट विल बी फ्रॉम लेफ्ट साइड, पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, क्योंकि माइनस जो है यहाँ पर बाइनरी के फॉर्म में है, यूनिरी के फॉर्म में नहीं है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा a इंटू बी, और जो आंसर आएगा वो सी से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे m और n ऐड होगा, x और y ऐड होगा, जो आंसर आएगा उसके बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? स्टार, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इन द लास्ट केस a x स्क्वायर, a into x plus b into x plus c, this is how it is being calculated. So पहले first of all what it calculates? It will calculate a x into x, bx and then c, and then add up all these three. Relational operators. Relational operators in C are less than, equal to, greater than, equal to, double equal to, not equal to. These are the relational operators. What do you mean by relational operator? Relation मतलब दो या दो से ज्यादा जो भी डेटा है उसके बीच में इस रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, उसको रिलेट करता है। ये पहले वाले से छोटा है या बड़ा है, ये दूसरे वाले से छोटा है या बड़ा है, ये दोनों बराबर तो नहीं है, ये दोनों अनइक्वल तो नहीं है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डेटा यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेटर। तो इस सिंबल को देखो, ये सिंबल जो रहता है, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर लेस देन, ये लेस देन के लिए है और ये ग्रेटर देन के लिए है। ये वाला सिंबल लेस देन इक्वल टू के लिए है। आपको मैथमेटिक्स में इस तरह का सिंबल दिखाई देता होगा, जब आप मैथमेटिक्स यूज करते हो तो यहाँ पर लेस देन दिखाई देता है और इक्वल टू ऐसे लगा होता है। सिमिलरली ग्रेटर देन और उसका इक्वल टू ऐसे, बट यहाँ पर लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, दीज आर द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड, क्योंकि इस तरह का कोई भी सिंबल नहीं है। लेस भी है, इक्वल टू भी है, या तो लेस या फिर इक्वल टू, या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू, और 2 बार इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। डबल इक्वल टू, अगर सिंगल इक्वल टू लिख रहे हैं, एक बार इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? That is used for assigning the value of one variable to another variable. This we will see later on. तो अभी जैसे सपोज हमारे पास में ये रिलेशनल ऑपरेटर को हम चेक कर रहे हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन yields a value of 1 और 0। तो यहाँ पर ये जो भी ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ये ऑपरेटर्स हमको क्या आंसर देगा? या तो 1 आंसर देगा या फिर हमको 0 आंसर देगा। तो अगर मैं 5 लेस देन 6 लिख रही हूँ, तो 5 की वैल्यू 5 इज लेस देन 6, if the result is true you will get 1 as an answer, or you can say true as an answer.
Similarly, minus 34 plus 8 is greater than 23 minus 5. So if first of all it performs the operations like minus 34 plus 8, ये ऐड कर देगा minus 34 plus 8, तो माइनस करेगा दोनों को और आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा. इन दोनों को माइनस करेगा, आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा. तो अगर ये पहला नंबर बड़ा नंबर सेकंड नंबर से छोटा हुआ तो आपको 1 आएगा, अदरवाइज यू विल गेट द जीरो आंसर. यहाँ जीरो इसलिए आएगा क्योंकि पहला वाला नंबर नेगेटिव है. कितना आ जाएगा, -26. यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18. दिस इज -26 एंड दिस इज 18. यहाँ पर क्या आ जाएगा, -26 is greater than 18. Is the statement correct? No, the statement is not correct. So you will get 0 as the answer. Similarly, A value is 3, B value is 2, and C value is 1. Then A is greater than B is greater than C. Is the statement correct? Yes, the statement is correct. And when we calculate the perform the arithmetical operations and calculate the expression, the operators will be associated. The associativity of the operators is from left to right. So operators की associativity क्या है, left से right के form में है. Left से शुरू होगा और फिर उसके बाद में वो right पे जाएगा. Okay. Logical operators. C has the following 3 logical operators. This is called as and, or, not. Okay. Double ampersand sign लगा रहा है. Logical operator pipe लगाना है, ये not है. Expressions connected by and or are evaluated left to right, and evaluation stops as soon as the truth or the falsehood of the result is known. जैसे ही उसका truth या फिर उसका falseness आएगा, result आएगा and or not operator का, then this is, it will help in performing the further calculation. मतलब जब भी हम ये operators use करते हैं, logical operators with some relational operator के साथ में यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में भी यूज कर सकते हैं. तो अगर हम ये यूज करते हैं तो हमारा आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है. यू विल गेट आइदर ट्रू और फॉल्स एज अ रिजल्ट. द नेक्स्ट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स? असाइनमेंट ऑपरेटर इज टू असाइन द वैल्यू to a variable a. So a is a variable in which the value 2 will be assigned. So the value which you want to assign should be put up on the right side of the equal to, और जिसके अंदर वैल्यू जाती है वेरिएबल के अंदर, that is on the left side of the equal to. तो equal to के लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल रहते हैं, equal to के राइट साइड में जो है हमेशा वैल्यू रहती है वेरिएबल की. So this is called as assignment operator, assigning 2 to a variable a. Similarly, if you would like to assign 2.3 to a variable t, then it is like this. 2.3 value will be assigned to t variable. तो ये वाला value इस variable को assign कर दिया. Okay. So what appears on the left hand side need not be repeated, and therefore it becomes either it becomes easier to write. तो जो left side में लिखा हुआ है वो repeat नहीं होना चाहिए. अगर वो रिपीट होगा तो उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी. एरर नहीं आएगा, ओवरराइट हो जाएगी. मतलब पहले मैंने प्रोग्राम के फर्स्ट स्टेटमेंट में a इज इक्वल टू 2 लिखा, 4-5 स्टेटमेंट्स हो गई, उसके बाद a इज इक्वल टू 10 लिख दिया, तो इसमें कोई एरर नहीं है. a इज इक्वल टू 2 जो स्टेटमेंट है वो ठीक है. उसके बाद जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा a की वैल्यू 10 हो गई तो वो a की वैल्यू 10 इंसर्ट कर देगा और a जो है वो वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी. तो दिस इज असाइनिंग द वैल्यू टू अ वेरिएबल. स्टेटमेंट इज मोर एफिशिएंट. So we'll see increment and decrement operators later on. So let's see these operators and the examples. Okay. So now let's see the program to perform arithmetic operation, that is arithmetic operator का program देख रहे हैं. Then next statement is, this is comment entry arithmetic operator, डबल स्लैश से लिखा हुआ है, ब्लू कलर से आया है. दिस इज कमेंट एंट्री. दिस इज इंक्लूडिंग द हेडर फाइल stdio.h, that is standard input output header file. Then main begins, then
का curly bracket begin and main ka curly bracket close. This statement is called as declaration of variables of type integer. So how many variables we have declared? 3, a comma b comma c. Next statement is यूजर को हम बोलेंगे कि यू एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, 2 इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यू को रीड करना है, तो यूजर में मैसेज प्रिंट किया, तो ये आउटपुट स्टेटमेंट है, ये स्क्रीन के ऊपर एंटर ए एंड बी एज इट इज दिखाई देगा. नेक्स्ट इज scanf %d मींस 2 इंटीजर की वैल्यूज को रीड करना है. वेरिएबल का नाम क्या है? ए बी, तो उसके आगे हमने m% लगाया है. m% इज टू रीड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए एंड बी. इंटीजर वैल्यू के लिए m% लगाया है. आफ्टर दैट ये स्टेटमेंट क्या परफॉर्म करेगा? जो भी ए की वैल्यू रीड की है उसको प्लस जो भी बी की वैल्यू लिखी है उन दोनों को ऐड कर देगा. जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल सी. And then we finally print. So %d will be replaced by the value of the c variable on the screen. So let's run the code. Compile and run. So it asks you to enter the value of a. Say here, for example, I enter the value of a as 4 and the value of b as 6. So the final result after addition of a and b is equal to 10. Now let's see to perform subtraction of two numbers. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? माइनस. ओके, अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लाई. तो लेट्स से प्रिंट सी डी इज इक्वल टू ए माइनस बी. यहाँ पर हम डी ले लेते हैं. प्रिंट एफ %d comma d. Okay, similarly if you would like to perform multiplication a star b, okay, so e should be declared over here. Then f is equal to a slash b. इंटीजर डिविजन होगा, ये ध्यान रखना है. f is equal to a plus b, so it will give you integer answer. So f %d comma e, then printf %d comma f. Okay, then we will see modulo operator, that is remainder. Remainder is equal to a %b. So after dividing you will get the remainder. Printf %d comma r semicolon. So r is the remainder. Okay, so let's run the code. Compile and run. F is not declared, we need to declare f also. A b c d e f. Okay, so let's enter the value of a as 4, value of b is 2. So the answer is 2 after addition, after subtraction 2. You are getting combined answer. So let's say we'll write message as well as print the value in the next line. So let's say sum is equal to %d slash n. Then difference is equal to %d slash n. Multiplication is equal to %d slash n. Then division equal to %d slash n, and last is remainder is equal to %d slash n. Slash n means what? Next line character. मतलब new next print statement will begin with the new line. Okay, let's compile and execute the code. Read the value of a as 4, b as 2. So the sum is 4 plus 2 6. Difference is 4 minus 2 is 2. Multiplication is 4 into 2 8. Division 4 divided by 2 is 2, and the remainder 4 divided by 2 remainder is 0. So you are getting the result like this. Let's see, suppose if I run the same code. If I run the same code for the value, say for example a is 5, b is 2, you will get sum of 2, 5 plus 2 7,
difference 5 minus 2 3, multiplication 5 into 2 10, division 5 divided by 2 is 2.5 आता है ना, बट आपको 2 आंसर आ रहा है, एंड द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग इज 1. रिमाइंडर के लिए हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर प्लस लिखा है. तो नाउ कैन एनीबडी टेल मी व्हाई आई एम गेटिंग ओनली 2.5 आंसर क्यों नहीं आया है? जस्टिफाई द स्टेटमेंट व्हाई यू आर गेटिंग ओनली 2.5 क्यों नहीं आया है? मैम क्योंकि इंटीजर है. क्या चीज? क्या इंटीजर है? ये वाला f ना. चलो मैं f को फ्लोट डिवाइड कर फ्लोट डिक्लेयर करती हूँ. f को मैंने क्या लिखा? फ्लोट. f को फ्लोट लिखा, डिवीजन में या परसेंटेज f लिखा, एंड देन लेट्स एग्जीक्यूट द कोड. a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, द आंसर इज 2.00000. Still you are not getting 2.5. Why? Still you are not getting 2.5. Why? Because a variable is integer. So when you divide a by b, a is integer variable. After division, you get temporary result stored in a variable. a का जो data type है, उस data type में result store हो रहा है, क्योंकि a integer है तो a का data type क्या हुआ? Integer. तो a का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, उसके अंदर a के अंदर टेम्पररी रिजल्ट स्टोर हो रहा है. जो रिजल्ट टेम्पररी स्टोर हो रहा है वो फिर उसके बाद में f में मूव हो गया. मतलब पहले a b से डिवाइड होगा, आंसर किस में स्टोर होगा? a के अंदर, और a के अंदर जो आंसर स्टोर होगा वो f में चला जाएगा. तो a इंटीजर टाइप है, डिवाइड करने के बाद में यहाँ आंसर क्या आया? 2.5 आया. पर यहाँ a इंटीजर होने के बाद 0.5 ट्रंकेट हो जाएगा, a की वैल्यू 2.000 रहेगी और ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगी. तो इंटीजर डिवीजन में 0.5 तो पूरा रिमूव हो गया, तो 2 आंसर आ गया. 2 आंसर जो है जब फ्लोट में स्टोर होगा तो f जो है 2.000 स्टोर कर देगा. यहाँ पर क्या किया? 2.5 आंसर आ रहा है, आंसर सिर्फ 2 स्टोर हुआ a के अंदर, और a के अंदर जो 2 स्टोर हुआ वो f के अंदर चला गया. जब f फ्लोट हुआ तो वो 2.000 प्रिंट कर दिया. अब मैं a को जो है, सपोज a को इफ आई टेक a एज फ्लोट वेरिएबल, a फ्लोट वेरिएबल ले लेती हूँ. Okay, and let's say ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज फ्लोट के साथ में डिवीजन रिमाइंडर नहीं आता. a की वैल्यू क्या एंटर की? 5, b की वैल्यू एंटर की 2, एंड नाउ द रिजल्ट इज 2.500. okay, because a is now float and the result in which we are storing the variable is also float type variable. किस वेरिएबल के अंदर रिजल्ट स्टोर करते हैं? वी आर स्टोरिंग द रिजल्ट इन f वेरिएबल. नाउ व्हाई यू आर गेटिंग एरर इन रिमाइंडर? ये वाला स्टेटमेंट क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है? क्यों? क्योंकि a जो है वो फ्लोट वेरिएबल हो गया. तो फ्लोट वेरिएबल के साथ में रिमाइंडर कैलकुलेट नहीं होता. 2.5 के साथ में जब हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा इंटीजर नंबर होता है, होल नंबर होता है. तो यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए ये एरर दे रहा है. ठीक है, तो अगर मैं a को इंटीजर डिक्लेयर कर दूंगी तो दिस स्टेटमेंट विल आल्सो वर्क. ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग द सेशन.